Today we are going to learn pointers and all the questions and answers of Standard 6th Subject English Unit 4.2 Molai's Kathoni. If you like our video, please like, share, subscribe our channel and press the bell icon for more related videos. So let's start. Unit 4.2 Molai's Kathoni. मोलाइस कैथोनी के मीनिंग होते हैं मोलाई का जंगल। इस लेसन के आज हम सारे पॉइंटर्स सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है अंडरलाइन द वर्ड्स यू फाइंड डिफ़िकल्ट इन द स्टोरी। इस कहानी में जितने भी अल्फाज आप लोगों को मुश्किल महसूस हों उन मुश्किल अल्फाज को आपकी दरसी किताब में ख़त कशीदा करना है। तो आपको इस स्टोरी को पढ़ना होगा और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो, मुश्किल अल्फाज हो, उन्हें पेंसिल की मदद से अंडरलाइन करना होगा। ये आप लोगों के लिए अमली काम है, इसलिए इसका आंसर लिखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज। नंबर 1, व्हाट टेरिबल साइट डिड यंग मोलाई सी। तो इसका आंसर लिखना होगा मोलाई सॉ थाउजेंड्स ऑफ स्नेक्स lay dead on one of the sandbars. Number 2, what did many of forest department people and village elders advise? तो इसका आंसर है many of forest department people and village elders advised him not to waste his time in growing trees. Number 3, what trees did Molai plant at the beginning? Answer, at the beginning Molai planted bamboos. Number 4, apart from the saplings, what else did Molai carry to the island? Answer, apart from the saplings, Molai carried to the island good soil, heaps of ants and different types of grasses. Fifth one is, what other things came to the island with the trees? तो इसका आंसर लिखना होगा with the trees came along birds, insects and animals, many more seeds and different forms of life to the island. Number 6, how much area does Molai Kathoni cover today? तो इसका आंसर है today Molai Kathoni covers an area of nearly 1500 acres. Number 7, what do the elephant visits show? तो इसका आंसर है the elephant visits show that the whole forest is in very good condition, well grown. Number 8, what hardships did Molai suffer on the island? तो इसका आंसर है Molai suffered the hardships like heavy rains, scorching heat, the opposition from the people, stealing from the forest and killing by the poachers. Number 9, what did the elephants destroy? तो इसका आंसर है the elephants destroyed the rice fields and the huts on their way. Number 10, what does Molai keep for his own living? तो आंसर लिखना होगा Molai keeps cattle for his own living. And last one is, what is Molai's message to the world? तो इसका आंसर है Molai's message says that each one of us should plant and grow at least 2 trees. Trees will help us to breathe happily. तो इस तरह से इन 11 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को लिखने होंगे। अब नेक्स्ट है नाउ नंबर द पैराग्राफ्स इन द पैसेज अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वेश्चंस अबव राइट द नंबर ऑफ द पैराग्राफ इन विच यू फाउंड द आंसर एंड और अगेंस्ट ईच पैराग्राफ राइट द नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं वो आंसर्स आप लोगों को किस पैराग्राफ में मिले उस पैराग्राफ का नंबर आप लोगों को उसके सामने लिखना होगा या फिर क्वेश्चन का नंबर आप लोगों को पैराग्राफ के सामने लिखना होगा। तो ये भी जो है ये एक तरह से अमली काम ही है, इसका कोई आंसर लिखना नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ्स के नंबर्स आप लोगों को देने होंगे जिसमें भी आप लोगों को ये आंसर्स मिले होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को इस पैसेज को पढ़ना होगा, इस लेसन को पढ़ना होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 टॉपिक्स दिए गए हैं और इन पर हमें शॉर्ट नोट लिखनी होगी। तो सबसे पहले जो है द ब्रह्मपुत्र, इसकी शॉर्ट नोट देख लेते हैं। द ब्रह्मपुत्र इज़ अ ग्रेट रिवर. इट इज़ मोर देन 7 to 8 kilometers in some places. It has many sandbars and even an island known
as Majuli Island. Waters of the Brahmaputra often flood Majuli and the sandbars. Sometimes the river sweeps away some of the sandbars. Second note है मोलाई कैथोनी, तो इस पे हमें इस तरह से नोट लिखनी होगी. Molai has grown his forest on the sandbars of the Brahmaputra. The forest is named the Molai's forest, that is Molai Kathoni. Today, Molai Kathoni covers an area of nearly 1500 acres. The forest has thousands of different trees and plants. It shelters birds and animals including deer, apes and even rhinos and tigers. A herd of about 100 elephants visits the forest every year and stays there for about 3 months. Third note is elephants come to Molai Kathoni. इस तरह से इस पर नोट लिखनी होगी. Because of the thick forest, a herd of about 100 elephants has started visiting Molai Kathoni every year. They stay there for about 3 months. They cause a lot of damage on their way to the forest. They destroy the rice fields and herds of the people. People of the area were angry with Molai because his forest had attracted the elephants to come over there. They wanted to beat Molai for the presence of the elephants. And fourth one is the world comes to know about Molai Kathoni. इस पर इस तरह नोट लिखनी होंगी. The world didn't know about Molai's work and Molai Kathoni. One day, a photographer wandering in that area found Molai working in his forest and guarding it. He was greatly impressed when he knew that Molai had grown the forest single-handedly. He told the newspapers, TV channels, etc. about Molai's great achievement. The forest department was also impressed and came forward to help Molai. The government praised his work and honored him with the prestigious Padma Shri award. Question number 4. Copy the quotations from Jado Payeng Molai in good handwriting and display them in your classroom. ये जो है एक तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को मोलाई के जो बयान किए हुए अल्फाज थे, जो कोटेशंस जिसे हम कहते हैं, उन अल्फाज को खूबसूरत तहरीर में लिखना होगा और अपनी क्लास में उसकी नुमाइश करनी होगी. चार्ट्स पर आप बड़े बड़े हैंड राइटिंग में लिख कर भी उसकी नुमाइश अपनी क्लास में कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5. प्रिपेयर पोस्टर्स ऑन प्लांट एट लीस्ट 2 trees each. प्लांट एट लीस्ट 2 trees each. इस उन्वान पर आप लोगों को एक पोस्टर तैयार करना होगा. और क्वेश्चन नंबर 6. Find the names and locations of at least 10 different trees in your surroundings. Write 1 or 2 lines about each of them. आपके आसपास में गर्दोपेश में पाए जाने वाले कम से कम 10 मुख्तलिफ दरख्तों के नाम आप लोगों को मालूम करके लिखने होंगे और हर एक के मुतालिक 1 या 2 सतरें लिखनी होंगी. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है, ये सारे प्रोजेक्ट हैं आप लोगों के लिए. आपको इन्हें अपने आप ही अमली तौर पर करना होगा, इसके आंसर्स लिखने नहीं हैं. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड राइट सिंपल स्पीचेस ऑन डायलॉग्स विद द हेल्प ऑफ द पैसेज. एनी 2. नीचे यहाँ पर जो ए से लेकर एच तक सिचुएशंस दी गई हैं, तो इन्हें इमेजिन करके आप लोगों को स्पीचेस लिखनी होंगी और किसी 2 उन्वान पर इसकी स्पीचेस लिखनी है. तो सबसे पहली स्पीच मैंने जो लिखी है वो है ए. Molai talks to himself after he sees the dead snakes. तो इसका आंसर इस तरह है. Molai said, "How sad! What do I see? It is a terrible sight to see thousands of snakes lying dead on the sandbars. They must have been washed ashore with the flood. Poor snakes! They must have died in the scalding sun because there are no trees to shelter them and protect them. I shall turn the sandy barren land green with trees and will never allow this happen anymore." And second, B.
Molai talks to the forest department people about his fish. तो इसका आंसर इस तरह लिखना होगा. Molai said to the forest department officers, sirs, I was working in a scheme of planting trees. I don't know why such a good work has been stopped. All laborers working with me have left, but I have decided to carry on the work all by myself. I'll plant trees without anybody's help. It is a mission of my life. Please help me with some saplings. तो इस तरह से स्पीचेस आप लोगों को लिखने होंगे एंड आई होप कि इस लेसन के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. गुड बाय.